शुरू करें. I think we can start 11 now. Maybe start, sir. Please. Okay. विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रतात्व धर्मापुनोति धनात् धर्म ततः सुखम. मीनिंग विद्या से नम्रता आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है. We all welcomes you in SWV family for great start of your career. Very good morning to all. On behalf of Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya, I, Ekta Tripathi, feel privileged to welcome you all in Abhinandan 2021. Today's session for Discipline and Code of Conduct. Discipline is the refining fire by which talent becomes ability. Discipline is the bridge between goal and accomplishment. Discipline is built by consistently performing small acts of courage. According to Abraham Lincoln, discipline is choosing between what you want now and what you want most. Today, we have with us Dr. T.K. Mandal, Coordinator, Discipline Committee, Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya. Before I introduced our guest resource person, Dr. T.K. Mandal, I want to request to dear students, if you have any query in between during this session, you may put your queries on Q&A section in chat box. Now I would feel privileged to introduce our guest or our resource person, Dr. T.K. Mandal sir. Dr. T.K. Mandal sir is a professor in management at Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya, Indore. He also heads the School of Law and the Center of Excellence in Happiness Studies. Dr. Mandal is an alumnus of IIT Kharagpur and NITI Mumbai. He has 35 years of rich experience, including 11 years as Vice President with JK Paper, New Delhi, and 11 years as Plant HR Head with Aditya Birla Group. Dr. Mandal has written articles and featured in interviews in several print and electronic media like Times of India Online, Hindustan Times, Financial Express, Mail Today, Great Place to Work Institute, timesjobs.com, Board Conversations, etc. He was also a panel member of Business Schools ranking by Business and Economy. Now, I request our versatile and charismatic Dr. Mandal to take over the session. Please, sir. Thank you very much, Ekta. Thank you, Thank you, Dr. Saurabh Jain, Dr. Pragya Jarolia, other colleagues. I also welcome all students who have joined this university in 2021 in different programs of study, including some programs in which I am also involved. I also compliment all of you for choosing Sri Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya to pursue your studies. Some of you stepped into the first stage of your higher studies, and some of you are going to pursue or further your studies in master's program. So those who are fresh from school joining the undergraduate programs, I think the number would be far exceeding those who have taken admission in the postgraduate programs. I know this particular group of students is a mixed group because of such realities. You know, most of you being in undergraduate programs and some of you in postgraduate programs. And because of this mix, for most of you, this particular session would be extremely important. So, band kar dijiye, disturb mat kariye.
This particular session, 1 hour session, will be extremely important because you have stepped out of your schools and then joined the college. Those who are in the master's program, for them, this is a sort of reinforcement of understanding, etc. The reason I said I sincerely wanted to compliment you for choosing Vaishnav Viswavidhalaya is SWB is honestly different in many ways from other private universities. There are so many of them across the country. You could have chosen any one. But then the very fact that you have chosen Vaishnav Viswavidhalaya will show you the way to character in life. Let me tell you, this is the stage, particularly for the undergraduate students, where the personalities get developed, and these are the formative years of one's personality, and this remains forever. Those who are in master's program will support me what I'm saying. If you have undergone undergraduate program somewhere, in some premises, the memories of those premises would ever remain in your mind till become old. Even today, I remember my own days of undergraduate programs and my hostel life, my college life, etc. You won't forget. So the values and the beliefs you inculcate during your undergraduate studies are something which are permanent in nature, and these values actually are impregnated in your minds through the value system of the place where you are studying. Okay, sometimes we call the values of workplace, but I put value system of the of the temple which imparts education is of paramount importance, in fact, utmost importance. I mean, there's nothing which can match the value system which which has a bearing on somebody's personality over the remaining part or remaining period of one's life. So, coming back, like many other universities, many other establishments, educational institutes, Vaishnav also has a set of values, and this set of values are very, very strong and very, very very much underlying in all the areas that we operate. And as you know, we are in education, so in dealing with students, in teaching, and everywhere we live these values. The code of conduct on which this particular session, this is the second last session, I'm sure you could be giving a sigh of relief because you have been undergoing this, the introduction and the orientation program right from Monday, and today is the 4th day in running. But let me tell you, this is something, this particular session, not because I am going to talk to you on this topic, is going to be something which is very, very different and very, very impactful, at least during the stay, during your stay with Vaishnav. The value system, as I was saying, of an institution is derived largely by the way we conduct ourselves in the establishment. We here means we, the faculty members, the teachers, right from the vice chancellor till the other junior level teachers, very, very new teachers, the support staff, and most importantly, the students community. In an education institution, it is the students who form the large and the bulk and chunk of the entire population. So it's the conduct of the students which actually determine the entire value system. And the conduct of the students is something which is a framework of certain rules. Most often they are written down rules, but several times these rules are not written. When we talk about code of conduct, normally we refer to discipline and code of conduct. Normally we refer to rules which are written down, which are published, which are there for everybody to see. But believe me, there are, in any establishment, there are, I would put it, larger number of rules which are not written, which go as per the, understanding the value system
They derive this set of rules. So we'll talk largely about the discipline expected from the students, the way you should conduct yourselves in the university, and some of the things which are unwritten, but then one is expected to follow uh, in this 1 hour session. As my colleague mentioned, Ekta mentioned, you can put your questions in the question box. We can address them towards the end of the session. Okay, so I'll take you through a set of slides to elaborate on what I was mentioning right now. Okay, so here we are. You can see the entire slide, isn't it? Yes, sir. Okay. As I was mentioning, every establishment, every institute has its set of values. Just 1 minute, there's something wrong. Yeah, as I was mentioning, there is every institution, every establishment, every organization has a set of values, principles, the beliefs through which it runs, and they live by these beliefs. Okay, and more often than not, these are called values. So Vaishnav Vidyapit Vishwavidyalaya also has a set of values. Okay, and these values are. Is the slide visible now? Ekta? Yes, sir, it's visible. Okay. Visible. Okay. Now, this set of values in Vaishnav, as we'll refer our university as Vaishnav more often, for the purposes. These are endurance, excellence, fairness, honesty, and transparency. Okay. I'm not going to explain what are these values. These are to a large extent or to a great extent, they are self-explanatory. But these are the ones which which we live by, which we always stand by. I know several organizations that have worked. Every organization has its own values, and you can even feel those values. You can feel the vibe of those values once you step into that organization. I'm sure once you physically step into SWV, and maybe to some extent when you join the classes, and by now you must have already got the feeling of the vibes of this value system. In next 2-3 months time, you will yourself be able to realize, yes, Vaishnav stands for these values. Now, code of conduct is something, as I was mentioning in the introduction itself, which supports these values, which helps these values to take roots. And hence, code of conduct is extremely important. Now, what is code of conduct? As we can understand by the phrase itself, it's a code. Code means a set of rules, there are certain established norms of conduct. Conduct means the way we behave, the way we conduct ourselves, the way we present ourselves in the society. And here the society is limited to SWB. Now, when we are talking about this code of conduct, it is applicable to all students of all the programs offered by the 19 constituent universities, institutes of the university. Okay, so each and every student
is covered under this code of conduct. Nobody is an exception. Irrespective of one's background and one's influences and other things. So that they have their own places. But code of conduct is something which is uniformly applicable to every student, and it applies on the conduct of the students on campus as well as off campus activities. And very often, we confuse ourselves that the moment we are out of the doors or gates of the university, the code of conduct, we are beyond the purview of the code of conduct, and it's not that. There are several instances where the conduct of students outside the university have been taken note of, and attempts have been made to correct those conducts. Reason? Because once you are a student of SWB, you also hold a small flag of SWB wherever you go, whatever you do. Okay, so therefore, you should not behave in such a way, or your conduct should not be in such a way that the value of this particular flag of SWB is lowered. Okay, so therefore, code of conduct is intended to be applied even outside the campus, off campus. Now, most of these things that we are going to talk about, you would find they are applicable when there is a physical presence of students. In today's context, when we have online classes, even this one is going on online, the orientation program is going on online. The importance of off-campus conduct assumes more significance. Therefore, you should keep this in mind, that whatever we're going to go through would have ramifications in the way we behave outside the campus and under the current circumstances. So coming to some of them, the responsibilities for the students, what you are expected to do. In terms of attendance, I think if you have not known about it, we are very, very firm on the requirement of attendance in classes. So therefore, the minimum attendance of 75% is mandatory for all the programs across the university. And this is the eligibility criteria for each and every student to appear for the final examination of every semester. I hope you understood the point. Let me repeat it. Unless a student attends 75% of the classes, and who certifies this? The teacher, individual teacher. Because the teacher takes attendance, puts it in the ERP. You can also see it from time to time. What is your attendance standing? Okay. So that you have a chance, for example, if at one point of time you see that you attended only 70% of the classes and it is midway through the semester. So therefore, you have the rest of the semester to make up for the remaining 5%. Okay. 25% attendance is left out. Why it is not 100%? 25% attendance is left out for different exigencies. Exigencies at home as well as within the university. Now, within the university exigencies, when you come here, you'll get to know about it. They are related to your participation in various co-curricular and extracurricular activities. So for that, 25% attendance has been kept aside. So you can't claim that I have taken part in this, so I have taken part in that, and this is what happened, my brother's marriage, my sister's engagement, and so on and so forth. So I could not attend, so less than 70% is because of that. No, 25% is kept to cover up those things. 75% is something which is non-negotiable, mandatory. Okay. Apart from this, in the other requirement is you must submit all your assignments on time regularly. So there are the students, the teachers who will be teaching you several different courses has an evaluation called or marks called internal assessment, and out of which 50% of the internal assessment marks are in the hands of the individual teachers. Now, individual teacher will not
assign those marks or allot those marks just by your name, by going by your name or your look or your color, etc. So he or she also would have certain criteria, and this criteria would be like quizzes, assignments, tests, sudden surprise tests, participation in class, and so on and so forth. Okay, so these are the different criteria, and out of that, assignments are the most important criteria. So teacher will give you assignments from time to time. It is the duty and responsibility of each and every student to complete these assignments, which are to be done beyond class hours, and submit these assignments on a regular basis. The other responsibilities of the students include, apart from responsibility to the academic committee of the community of the university, as I was saying, that you are also, once you have taken admission in SWB, you are also part of the value system of SWB. So you also have a responsibility towards the entire academic community of the university. So apart from that, you are expected to demonstrate high standards of academic and professional honesty and integrity. So professional honesty and integrity are extremely important. You are not expected to do any cheating, not only in exams which will come later. You are also expected to behave in a fair manner, in an honest manner, and keep your the human values upright in whatever you do, as long as you are a student, at least as long as you are a student of SWB, and hopefully you continue to do that the rest of your life. And you are also expected to respect the rights, privileges, and property of other members of the academic committee and society. So you must know that a fellow student, irrespective of the program he or she belongs to, another staff colleague or a faculty staff member of the university or a faculty member of the university, everyone has one's rights and privileges. The university has its properties. You must consider them also as a part of the system, and must respect those and must not resort to downgrading the values of these things. You should all the students are expected to contribute towards the academic goals of the university and the welfare of the academic community of the university in particular, and academic community in at large. Okay, so academic goals of the university are what? To excel in education and research. Okay, so unless you do well in education and research, the overall goal of the university will not be achieved. So therefore, you are expected, and you should be able to contribute to the academic goals of the university by continuing to excel in your education, in your studies. You must refrain from any conduct that would interfere with university functions or endanger the health, welfare, or safety of other persons. Okay, you must not do something which is detrimental to things like health, welfare. For example, in when it comes to health, a very simple example today I can give is, in today's circumstances, you must take care of your health first, and then see that your health or your ill health, or God forbid, that does not happen. Your ill health does not impact other students or other faculty members or others in the university. Okay, so you must yourself understand and decide what is that action of yours which is going to put the health, welfare, or safety of other people in the university to risk, and you must not do that. You must, once you understand it, you should stop doing that. No student should discriminate on the basis of race, color, creed, age, religion, gender, national or ethnic origin, marital status, sexual preference, physical disability, or any other legally protected status. So these are all the status which are protected by law through the Constitution of India. Like all other establishments in the country,
we also believe in totally non-discrimination, policy of total non-discrimination. And we don't differentiate people based on their, color of the skin. Of course, color of the skin in all cases, there's no foreign student, they're all brown. But then race, caste, creed, religion, gender, etc. Okay, we don't discriminate, and each one of us is same. We stand on the same platform of SWB, and once you are boarded that platform, you also would be expected not to discriminate people on the basis of one's religion or one's caste or one's gender, and so on and so forth. So, as citizens, the students, all of you, should at all times conduct yourselves in a manner which is not prejudicial to any law or rules of the university. So, there are several rules of the university which we'll get to know from time to time, but and some of them I'll be showing you following these slides. So, you must ensure that you don't contravene those rules and rules and regulations of the university. Your conduct should aim to achieve the meaning, mandate, and manifestation as enshrined in the Constitution of India. And the most important part of it is what I have shown in the previous slide. What would be construed as misconduct or indiscipline? See, I forgot to tell you in the beginning itself, the purpose of this particular session is not to, show you red eyes or, scare you or warn you or, that kind of thing. You're phrase to the university, we all know. All that we are trying to do is we are trying to sensitize you on certain aspects of the university, which the university strongly believes in. And now you being the part of the university, we also expect you to follow the same path. That's the pure and sole purpose. Now, once you do that, there's nothing to worry about, nothing to get disturbed about. So, however, in rare cases, there are people who stray and who indulge in certain misconducts or indisciplines. And what are those? This is the slide which talks about what are the misconducts or indisciplines. Any student found to have committed or to have attempted to commit following misconduct, we have, next 7-8 slides, we have several examples of misconduct. So this will be construed as misconduct, and therefore they will be subject to disciplinary action. So I'll request you to, go through the slides, following slides as and when I show them very carefully, and keep them in your mind to avoid any disciplinary action, to stay away from misconduct and contribute to the academic cause of the university. So these instances of misconduct are not to be interpreted all inclusive of situations. That means these are illustrative. Okay, all the misconduct that I'm going to show are only illustrative. And there are more types of misconducts which are not necessarily written here. As I was saying, everything cannot be written down. You see, why there are rules, why there are written down rules and laws and things like that. It is because human being by nature is prone to violate expected norms. Not always, they are prone to violate expected norms. The written down stuff actually helps some people to remain on track. Now, having said that, when you write down, you cannot take the entire universe and put them in writing so that everybody follows it, and there's nothing which is left out. As a honi sakta, our constitution is the largest constitution in the world, Indian constitution. The effort was to include everything that comes to your mind as a citizenship right. But then even after that, there are a lot of things which come up from time to time, which are beyond the purview of the constitution. Either they are included in the constitution as constitution, by parliament, or the amendments take place in the constitution to include those aspects. So coming back to the
the misconduct that we're going to see here, they are not all inclusive. There can be misconducts beyond this as well. Okay, and there also, in those cases also, there can be disciplinary actions if they are violated. Now, this is the first three. Okay, the illustrative list of misconduct. DMC stands for disciplinary misconduct. Number one, academic misconduct. Now, academic misconduct means plagiarizing, cheating on assignments or examinations. Okay, now this has A and B. One is cheating. This is a very common misconduct which in the students community, which you find everywhere, and naturally this would appear as the first misconduct in the list of misconducts. The act of obtaining or attempting to obtain credit for work by use of dishonest, deceptive, or fraudulent means. Now, dishonest, deceptive, and fraudulent means have not been clarified, but you can understand what are those. They are means which are not expected from a student while getting credits from academic point of view. Now, here, marks. Okay, read this as marks. So you should not attempt to get marks by such means. This will amount to cheating. And once this is amounted to, when somebody resorts to cheating, one would be subject to disciplinary action. The second one is plagiarism, which would be coming in play in case of all of you. May not be in the beginning itself, but at a later date. And what is plagiarism? Those who do not know, is the act of taking ideas, words, or specific substances of somebody else, and offering them as one's own. So plagiarism would mean copying your colleague's assignment and presenting as your own. Okay, plagiarism in technical terms means copying the research work of somebody else, taking the research works or research ideas or academic publications of somebody else and projecting them as yours. Now, plagiarism has a very severe treatment even by the University Grants Commission, and therefore is now a dreaded word in the research community. But instead of going into that, for students, all that I'm trying to say is that everything that you do as a student has to be your own, and any deviation from that would amount to a misconduct called plagiarism. And therefore, if this is resorted to, it will be subjected to disciplinary action. Second misconduct, disruptive conduct. As the name suggests, the conduct that intentionally and substantially obstructs or disrupts teaching or freedom of movement or other lawful activities on university premises or in connection with any university sponsored event or activity. So there should not be any intent, leave aside act of disrupting the university activities, which includes teaching and university programs or activities or events, either individually or collectively. Now, if that happens, the individual or the collective individual will be treated as having committed misconduct. Second one. Third one is discrimination. As you have seen in the previous, in one of the earlier slides, we as the university do not discriminate, and therefore we would also not expect you to discriminate. Now, if somebody is engaged in verbal or physical behavior directed at an individual, physical or verbal behavior, both ways. Okay, physical as well as verbal. If you if anybody directs a physical or verbal behavior to a group or individual based on their origin, their race, their creed, their gender, their religious beliefs, etc., sexual orientation, that according to a person or of reasonable sexuality is likely to create an intimidating or demeaning environment that impedes the access of other students.
faculty and staff to the educational benefits available to them. Simply put, instead of going to this complex language, your forget about physical action, as I said, even verbal act of mentioning somebody, I mean, mentioning somebody's origin. He comes from a family, as poor background, very negative background, come from a particular gender. Okay, here gender will mean both male, female, as well as bisexual. Okay, religious beliefs. Okay, taking somebody or taunting somebody on the religious beliefs. This will amount to discrimination, and this will be treated as disciplinary misconduct number 3. It also includes wearing clothes with derogatory, racist, discriminatory parentage. So verbal as well as non-verbal. Action to hai, action means physical action. And verbal is clear, but this talks about non-verbal actions. So wearing clothes which has derogatory, racist, discriminatory, or patently offensive, or profane, or sexually explicit, or graphic messages, either in words or pictures. So that also would be considered as DMC number 3. Okay, will be treated as a discriminatory action or a discriminatory act on part of the student. The 4th one is falsification. Falsification means willfully providing university offices or officials with false, misleading, or incomplete information. Forging or altering official university records or documents, or conspiring with or inducing others to forge or alter university records or documents. Now, there are quite a few things covered here. You must keep this in mind. This includes conspiring with or inducing others in forgery, in the act of falsification or forgery. Okay, so if somebody does in connivance with some other in making a false certificate, or forging somebody's signature, or some scoring records, etc., it will be treated as a falsification. Or somebody inspires others, induces others. अरे तेरे को मार्क्स कम आया, 10 आया, एक को नंबर 1 को 4 कर दे, 40 हो जाएगा, पास हो जाएगा. जो करेगा वो तो गया, जो इसको इंड्यूस करते हैं वो भी जाएगा. So inducing others also is an equally equal misconduct as doing itself, doing oneself a forgery. So falsification is a major misconduct that you can see in this slide. Then refusal to identify. Once you are within the precincts of the university, now precincts of the university would mean online precincts, including the one we are now talking or interacting on. Now, at every place, every student is supposed to identify himself or herself when it is required, when somebody asks for it. Okay. Take for example, I don't mean it seriously right at this point. I can simply go to the participant list and find out the XYZ name and say, who is this person? Identify yourself. That means you have to say that, sir, I am from this particular institute. I have taken admission in this particular program, and so on and so forth. And I ask some more identity of yours. You are supposed to disclose, divulge those. So if you refuse, if you don't, don't go by the demand of identifying yourself, this will be treated as a misconduct. So refusal to identify, remember, will remain a misconduct as long as you are in the university. Illegal or unauthorized possession or use of weapons. This is something extreme. I'm sure none of you would be so bad that आप कोई weapon लेके firearm, चाकू, छोरा लेके आओगे या explosive लेके घूमोगे. I hope by God's grace, you're all good boys and girls, but still this is listed as a
disciplinary misconduct. Illegal or unauthorized possession of or use of weapons means use of weapons means possessing or using weapons or articles or substances usable as weapons, including but not limited to firearms, license, incendiary devices, explosives, and dangerous biological or chemical agents. So you should not, even by mistake, possess any weapon. Forget about using it. Okay, this will be treated as a misconduct. Illegal or unauthorized possession of use of drugs or alcohol, smoking. SWB strongly support the goal of drug-free campus. It is the policy of SWB that no student shall distribute, possess, or use illegal drugs, a controlled substance, on its premises. Possession of paraphernalia associated with the illegal use, possession, or manufacture of a controlled substance is also prohibited. It is also the policy of university that smoking is prohibited in whole campus of SWB. The possession of drug, okay, in any form, in chemical form or in some other form, it is by law itself prohibited. It's a criminal act. So one must be very careful against that. University with the high. Okay, it's a very serious offense. You must be aware in some of the countries, possession of drugs. आप लोगों को पता होगा जैसे वो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा है. In some of the countries, mere possession of drugs calls for death penalty. Okay, so it's very heavy punishment, capital punishment. So drugs, etc., something I'm sure the situation will never come, but we must be very careful about it. Must stay far away from even the word drug. And within campus, university campus, smoking is prohibited. Okay, you must not resort to the habit of smoking at all. Forget about in the SWB campus. Smoking and drinking. Unauthorized access and use. Unauthorized access means accessing without authorization university property, facilities, services, or information systems, or obtaining or providing to another person the means of such unauthorized access, including but not limited to using or providing without authorization keys, access cards, or access codes. ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो एक्सेस कोड है, फॉर एग्जांपल ईआरपी का जो एक्सेस का लॉगिन credentials जो है, you are not expected to share with anybody else. Any other authorization key that has been shared with you by your teacher, okay, you must consider as a trusted property of yours, which has been given you by trust by your teacher. Okay, you must not enter university properties. You know, so there are so many places where without permission and authorization it should not access, it should not enter the facilities or services, etc. Act of violence, threatening, harassing, or assaultive conduct. This is something which is highly detrimental to upkeep to keep the values of the university, to keep up the values of the university. These acts against it, acts of violence, threatening, harassing, it's like बाजार के जो है वो जगह बस बन जाती है. But हम लोग को जो है, once you have stepped into university, you must consider that this as your temple. आप ये सब चीज की जो है बारे में सोचना भी मत. Acts of violence, violence means violence against anybody. यहाँ पे लिखा है, acts of violence, threatening, harassing, or assaultive conduct means engaging in conduct that has caused injury to other residents of the campus. Residents of the campus means other students, staff, faculty, everybody. Endangers or threatens to endanger the health, safety, or welfare of another person, including but not limited to threatening, harassing, or assaultive behavior. So, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज बिल्कुल नहीं. Okay, so this will call for disciplinary action. Theft, property damage,
theft, property damage, and vandalism includes theft of or embezzlement of damage to, destruction of, unauthorized possession of, or wrongful sale of gift of property. हिंदी में कोई भी चीज को embezzlement करना, what do I say, in a wrong way, उसको possess करना, उसको लेके जाना, छुपा के, चोरी करना, we can put it in a very crude way, or damage करना will also be an act of indiscipline. Recording of images without knowledge. Using electronic or other means to make a video or photographic record of any person in a location where there is a reasonable expectation of privacy without the person's prior knowledge. When such a recording is likely to cause injury, distress, or damage to reputation. Now remember, there is an argument going on between two other students, and one of you, a third student, आजकल ये बड़ा फैशन हो गया, पास में साथ में मोबाइल रहता है तो कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो. Now you may say that this is just a very simple act of video recording, ये हो गया, बाद में कोई मांगेगा तो मैं दे सकता हूँ, but it may actually cause distress to either or both the parties, quarreling parties. Okay, दोनों जो लड़ाई कर रहे थे उन दोनों के लिए डिस्ट्रेस का क्रिएट कर सकता है. And in that case, this act of photography, because you have taken this without their permission, may result in indisciplinary act of yours, and then may lead you to disciplinary action by the university. This includes, but is not limited to, taking video or photographic images in shower, locker rooms, residence hall rooms, and restrooms. ये तो extreme है, मैं तो बड़ा common बता दिया. Storing, sharing, or distribution of such unauthorized records by any means is also prohibited. Very, very serious misconduct हो जाएगा. Causing disrepute to other students, engaging or inciting other students to engage by any means whatsoever, and performing or attempting to perform an act which bring disrepute to other students, faculty of the university. Okay. So this is I hope it is clear. If it is not clear, please ask. Engaging or inciting other students to engage in any means whatsoever in, and performing or attempting to perform an act which bring disrepute to other students, faculty of the university, including the university. बदनाम किसी का, कोई दूसरे स्टूडेंट का, फैकल्टी, स्टाफ, और इवन यूनिवर्सिटी, और इवन आपका इंस्टीट्यूट में हो, आप जैसे को जो भी इंस्टीट्यूट में, इसमें कोई चीज मतलब इनका बदनामी होने वाला है तो दैट विल बी आल्सो ट्रीटेड, एनी एक्ट ऑफ योर्स दैट विल बी ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट. फेलियर टू कंप्लाई विद यूनिवर्सिटी और एनी अदर अथॉरिटी. Failure to comply with legitimate directives of authorized university officials, law enforcement agency in the performance of their duties, or violation of the terms of disciplinary action. So there are university authorities in various departments, right from establishment to administration to academic section to accounts, examination. Okay. Now everybody has certain authorities, certain duties to perform. Now, if you comply with any of such legitimate directives of such authorities, for example, students can ask to certain certificates and you don't follow that, it may cause indiscipline. Even it may amount to indiscipline. Ragging, any act which amounts to ragging in any form, as defined under the UGC or AICTE provision or ragging regulation 2009, will be termed as ragging. So I'll request you, this is not the place, I am not going to show you these regulations, but some of you who are interested may go to UGC website or search ragging regulations 2009 and have a glance, have a look at it, so that you are not caught on the wrong foot tomorrow. And let me tell you, the provisions of ragging has been extended to online acts as well. Okay, now you are freshers, so you may not be ragged, but then you may not be doing ragging, but there may be acts which you may not like, and you may like to know whether that amounts to ragging or not.
Okay, so ragging. Contracts. Students are prohibited from entry into verbal or written agreements or contracts that purport to bind, obligate, or create liability of any kind for university. तो आप कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट कोई इसमें नहीं जाओगे, अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाओगे औरों के साथ, जहाँ पे यूनिवर्सिटी भी पिक्चर में आ जाता है. The university will hold all such students individually liable for any financial or legal consequences of damages that may result from such an operation. Abuse of electronic communication. You will be privy to the university Wi-Fi, university ERP, university mailing system, and many other communication systems. So there should not be any abuse of such privileges which are extended to you as students. So using university or personal telecommunication, data telecommunication networks for illegal or improper purposes or in violation of the university regulations and policies or related laws. So that will be treated as misconduct of abusing electronic communication. Next one is media contact. This is again a very important one. You must be very careful in terms of speaking on behalf of or for university with any media organization or publication, or from inviting the same to any university owned or operated property. University premises में कहीं पे भी बस में, you should not call anybody who is from a media organization or any publication, newspaper or other online publication firms. Facility or event without the express written permission of the office of the university committee. So if you are a part of some team, some committee, etc., please obtain written permission from the coordinator of the event and then only contact the media people. If you happen to be a media coordinator for that particular event. Organization and event registration. A student or group of students shall not form any organization, society, or organize any event or collect any fund or subscription without the specific written permission of the university. Okay, तो आप लोग कोई भी चंदा उठा के किसी को भले कोई भी अच्छा काम हो, you must not resort to that, collecting fund or subscription from people or form a society, form a group without the written and express permission of the university. Written permission. Presenting false testimony, this is something which is similar to falsification. Okay, but here it is specific to testimonial. Knowingly making false statements regarding a disciplinary matter before, during, or after disciplinary adjudication. So when a disciplinary action takes place, if there is a conduct of indiscipline by one or more students, a group of students, there is a procedure. University follows a particular procedure of it's not adjudication, of inquiry and fact finding, and thereafter adjudication, deciding what action should be taken. Now, during this process, if you are called upon to testify, to give your statement, your understanding of situations, you must not falsify, you must not give false statements. Okay, you must always stand straight and give facts as and when they are asked. Next one is violation of university rules, violation of order published in other published university regulations, policies, or rules, or violation of law. These university regulations, policies, or rules include, but not limited to, those rules which regulate dress code, submission of assignments, examinations, and which prohibit the misuse of library, misuse of computing resources, misuse of laboratory, sexual harassment, and hostel rules and regulations. We have hostels, so there are those who are residing in hostels, those who will be residing in hostels, we have hostels. So that will also come under violation of university rules. Okay, so these are some of the rules which I'll take you through very quickly.
Dress code. Some of them, not all. Dress code. What is the dress code for boys? Shirt and trouser is the regular dress. Formal jeans and formal t-shirt with collars are also permitted as regular dress. Okay, you're not expected to wear, collarless t-shirts. On formal occasions such as seminars, workshops, examinations, etc., placements activities, placement का समय में, boys will be required to wear white shirt, black trouser, black blazer. Now this is the uniform, okay, university uniform. White shirt, black trouser, black blazer, black tie, and black shoes. Okay, so you must have a set of this, and on formal occasions when there is an event, university event, your institute or departmental workshop or seminar, when you are supposed to be present, even if it is online, you are expected to wear this formal dress for boys. And for girls, normal regular dresses, salwar kameez, and formal jeans, formal t-shirt with collar are also permitted, like boys. On formal occasions, just like boys, the girls are expected to wear or are required to wear white shirt, black trouser, black blazer, black tie, and black shoes. Now, this is common for all the students. Wearing identity card is mandatory for all students. You must keep your identity card with you all the time, and particularly when you are coming to the university. There are students where we have seen who are careless about their identity card. Remember, identity card is extremely important thing, and you must be in possession of your identity card at all times you are in the university premises. If you lose your identity card, you must get a replacement immediately. Okay, the moment you lose it, you must seek replacement of the identity card, of course, by paying a fine or new card fee, whatever are the legitimate charges. The punishments and penalties include warning. Okay, when misconduct takes place, the penalties or the punishments range from warning. Warning can be a written letter, written warning, or reprimand. Okay, saying that you have misconducted and you have done misconduct, committed a misconduct, and must not repeat it. The second one could be suspension. A student found to have committed misconduct may be suspended for a specific time, almost nearing completion. Okay, for a specific period. There can be monetary fine. Okay, the monetary fine means if there is misconduct and the committee finds, the inquiry committee finds and decides that there has to be monetary fines, the student is expected to the fine after deciding the amount is expected to deposit the amount as penalty. Okay, confiscation. Confiscation means confiscation of goods. आपसे सामान ले लेना. Used or possessed in violation of university regulations. तो आपके पास अगर समझ लीजिए कोई आप किसी के पास छोरा चाकू कुछ मिल गया, the university will confiscate that there are something which is not your expected not to possess that, it will be taken away from you. That is confiscation. Restriction of privileges. Restriction of privileges means denial or restriction of specified privilege, including but not limited to access to student facilities. For example, you may be debarred from using the library or the student center or some other facilities for a specific defined period of time as a punishment of certain misconduct. Withholding of degree. Withholding of degree or whatever, diploma, whatever you get, which you earn may be withheld for a particular period of time. Okay, unless it is revoked. Okay, that again the committee will decide based on the gravity of the misconduct. Dismissal. This is a very severe punishment, as you can understand. Dismissal also, this thing misconduct also may result in dismissal of a student
which means permanent separation of the student from the university without an opportunity to re-enroll. You will not be able to get readmission also in the future. So that's the ultimate punishment for a student indulging in several severe misconduct. Of course, there is other actions which can be taken. Now, for ragging, there is an anti-ragging committee of the institute. Is a some of you may note down your departmental person or institute person from this list. So this is for the current year, that is 2021-22. I, Dr. T.K. Mandal, I belong to the School of Management, Sri Vaishnav School of Management. I am the coordinator of the anti-ragging committee and the disciplinary committee, of course. The co-coordinator is Professor Upendra Gupta from Mechanical Engineering of Sri Vaishnav Institute of Technology and Sciences, SVITS. And there are all HOI head of the institutes, coordinators, and all HODs are members of the anti-ragging committee. The joint registrar, Dr. Arvind Singh, is also in the anti-ragging committee. Apart from this, from civil, there is Professor Sudhanshu Dubey. From School of Management, Dr. Rishu Roy. From Computer Applications, Professor Sudarshan Dubey. From Social Sciences, Humanities and Arts, Anurag Joshi. Gaurav Makwana from Electronics and Instrumentation, Electrical and Electronics. It is now called Electrical and Electronics. Manoj Dhawan from IT. Vikas Rathod from Institute of Commerce. Ravi Banswal from Physics Department of Institute of Science. Sasank Vishwakarma from Mechanical. Anurag Golwalkar from SBIIT, Institute of Information Technology. From Forensic Science, Nirvan Imbole. From Mechanical again, Sandeep Garg. Institute of Agriculture, Satish Patidar. Institute of Textile Technology, Ajay Shankar Joshi. Geetika Joshi from Institute of Architecture. And from School of Management, we have support staff in Mangalesh Chapurkar. So have a glance once again at your institute representative. Anytime, anything, you can contact the corresponding representative regarding ragging. With this, I stop here. I have exceeded by 2 minutes. And thank you so much, sir. Sir, some queries from students. Okay. Sir, most of the students are asking about the classes. What classes? Offline classes. When will offline classes will start? When will start offline classes? Yes, sir. That's a question not under this word, but then let me try to answer this. You see, offline classes, you all know, have started in many colleges and many schools, partially. We are awaiting a very clear-cut green flag from the administration. And let me tell you, we are a little conservative and little careful. You already noticed in my presentation, looking at the safety and health of the students, and welfare of the students, we are a little conservative and a little careful. So that is delaying the process. The moment we get a clearance from the administration, classes will start offline. But this has been an issue. I know, many students have expressed this, past students as well as current students, that they were dying to come to the university. This is your temple. This is the place where you spend your formative time, formative years. So I know you are missing it, and you should be in the campus sooner or later. Let's hope things come up, positively very fast. Sir, Bhumika Chandwani asking for girls formal dress. It is mandatory to have any university logo on the black coat or not? There is university logo on the black coat, but exactly what is the logo? I mean, the university has a logo, definitely, all right. The blazer must have an university logo. Now, normally, what happens in most of the universities, the logo or the blazer is supplied by the university. We don't do that. So I'm not very sure whether it is mandatory or not, but it is preferred that you have an university logo on your own. University is not going to give you the logo.
You can find out the availability and preference later on. But one thing is certain, that university does not provide the logo on your blazer. It's applicable for boys as well. So most of the questions regarding online classes, when we will get timetable or WhatsApp group, we didn't receive third session link from department or institute. Say, for all of you, today, after this particular session, Sri Krishna Charan Das is already waiting. Namaskar. He is already with us. His session would be there. His session would be one of the most powerful in the orientation. Yes. And with that, you would have the common orientation, the complete common orientation of the university. Post lunch at 2 o'clock, all of you must join your respective institute sessions, for which you must have already got the link. So you must join those sessions. Why I am saying that, these finer points, like when is the class starting, what is the timetable, what are the syllabus, who is my class teacher, who is this, who is that, what is not, and all. These are very not natural, normal for coming to your minds. These are quite natural. So these questions you keep reserved, and you must raise these questions when you meet in the institute forum, respective institute forum. As a thumb rule, you are expected to get your timetable, but before the end of the day, because from tomorrow onwards, your regular classes are starting for everybody. Number one. Number two, the timetable also would mention about the subject names and the respective class teacher. Yes. As far as your schemes, what are the subjects you are supposed to study, at least in the first semester and the next semester, 7th semester, is available in SWB website. Under your respective institute name, there is an institute tab. You go to your institute, then you go to the syllabus. You'll find what are the courses you're supposed to study this semester and the next semester, and what are the topics that will be covered in each of the courses. Timetable will give you the teacher names and the timings. Every institute, we also have a practice to create WhatsApp groups for every class. For example, mechanical engineering first year. Okay, so there will be a WhatsApp group for mechanical engineering students of the first year, which you also would have, if not all the faculty members of mechanical engineering, the concerned faculty member who will be taking class in the first semester. So it's a joint group. The timetable is expected to be floated there, and all semi-formal and formal communications regarding students or student-related activities will be done through the WhatsApp group. And these groups are also supposed to be formed by the end of the day today, if not already formed. I think 90% institutes or 90% classes, for 90% classes, the WhatsApp groups have already been formed, as I understand. Okay, so don't, curiosity is obvious, and you must have curiosity. I keep telling everybody, curiosity is something which takes us tomorrow. Always, look forward to tomorrow. Unless you are curious, today will be the end of the day. Yeah, I like it. So you must be curious, and you must address your curiosities every now and then. Yes, sir. Okay. All dear students, आप लोगों को जब आपका 1:30 to 3:30 जो सेशन है, आपके इंडिविजुअली क्लास टीचर्स के नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, everything will be received to you and emailed to you, and you are feel free to contact anybody in SWB campus. Thank you so much. This is very enthusiastic and informative session for all the students. Thank you so much, sir. At last, and for the end of the session, the distance between your dreams and reality is called discipline. डिसिप्लिन केवल कैंपस के लिए नेसेसरी नहीं होता, वो आपकी लाइफ के लिए नेसेसरी होता है इफ यू वांट टू गेट सक्सेस. सो बी डिसिप्लिन्ड एंड कीप योर एम. थैंक यू सो मच, सर. I would like to take over the session to Ruchi ma'am. Ruchi ma'am. Thank you, Mandal sir. Can I sign up? I have a class, so I'll join. Thank you so much.
And wish you all the best, students, once again. Okay. Have a nice stay in SWV. Ruchi ma'am, you may continue. Ma'am, mic. Ruchi, kindly unmute. No. Ruchi, you're not audible. Please check your mic setting. Hello. Yes, ma'am. Audible. Now I am audible? Now I am audible, sir? Yes, ma'am. Yes, you are audible. Because of network glitches, this is the issue. No problem. So, shall I start? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build this event, Abhinandan 2021. With this note, I would like to welcome our resource person, dignitaries, faculty members, and dear first year student, #freshers, in the Power of Habit session. The difference between who you are and who you want to be is what you do, given by Charles Duhigg. With this note, I would like to introduce our resource person to the audience. Today, we are having with us Shri Krishna Archan Das Ji with us. Shri Krishna Archan Das Ji is a motivational speaker and youth counselor, teacher of Sanatan Dharma, based at Indore. Currently, Guruji is serving as student counselor and youth outreach director of ISKCON Indore. He is from engineering background and joined ISKCON as a spiritual guru in 2001 in Hyderabad. Since then, he has been traveling extensively and lecturing to students in several colleges, including IIT Bihu, JNTU Hyderabad, NIT Bhopal, NIT Allahabad, IIIT Jabalpur, and IIIT Allahabad in India. And also in University of Pennsylvania and Temple University in Philadelphia, USA. He motivated thousands of youth to apply the practical wisdom from ancient Indian culture in their daily lives to overcome the stress of life and attain ultimate success and happiness. Without taking much time, I again welcome Guruji and invite Guruji to enlighten us with his ocean of knowledge. Over to you, Guruji. Okay, thank you very much. My heartfelt thanks to the administration of SWV for giving me this opportunity to share some thoughts and some useful tips on the power of habits. And we'll also see how habits are relevant to student life and how this can change your career and your destiny once and for all. So habits are very, very important, and this is the time when you're just moving into college. This is the best time for you to develop your habits and to regulate them properly, and how that can help you in your overall life we're going to see today. So let me share the screen. I have a PowerPoint presentation to share. So everyone, please pay attention for the PowerPoint presentation and the talk. At the end, I'll just ask some very simple questions, and I hope you all will be able to answer those questions. And so please pay attention. And if you have any questions, you can ask also. We'll have a question and answer session at the end. Last 10 minutes, we'll have question and answer session. Okay, so we'll start now. Can you all see the screen? Can you all see the screen? No, sir. Sir.
Okay. This is the problem. Screen share. Okay, just let me know if you can see the screen. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir. Now it's visible, perfectly visible. Okay. So today we are talking about the power of habits. So, being a slave to a bad habit or a servant of a good habit, the choice is yours. This is a quotation from Fred Van Amber. There's a word slave. Slave का मतलब क्या होता है? Should I speak purely in English or should I mix Hindi and English both? Hindi English mix करें कि purely English में बोले? Yes, sir. You can mix both. Okay. Thank you. So, being a slave to a bad habit, slave का मतलब क्या होता है? गुलाम. Servant का मतलब होता है नौकर. नौकर और गुलाम में फर्क ये होता है कि गुलाम को चॉइस नहीं होता है, पर नौकर को चॉइस होता है. हाँ, तो बैड हैबिट के कोई व्यक्ति नौकर नहीं होता है. बैड हैबिट का क्या होता है? स्लेव, गुलाम होता है. पर लेकिन गुड हैबिट का सर्वेंट होता है. तो अपने को गुड हैबिट का सर्वेंट बनना है कि बैड हैबिट का गुलाम बनना है, ये अपनी चॉइस. सो एवरीवन शुड हैव हैबिट्स, एवरीवन हैज हैबिट्स. हैबिट्स के बिना कोई रह नहीं सकता. पर अच्छे हैबिट्स डेवलप करें, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें या अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप करें, ये हमारी चॉइस, राइट. तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैबिट्स. वी मेक आवर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स मेक अस. हम अपने हैबिट्स बनाते हैं और उसके बाद हमारे हैबिट्स हमें बनाते हैं. Okay, so this is a brief introduction about myself. Your teacher already has explained this. तो आज हम देखेंगे what are habits. Habits क्या होते हैं? How are habits addictive? What are the effects of bad habits? Habits कैसे बनते हैं और उसके effects कैसे होते हैं? और bad habits में क्या खराबी है और फिर वो अच्छे क्यों लगते हैं? उसके बाद हमारा माइंड कैसे काम करता है वो देखेंगे. हैबिट्स कैसे बनते हैं और हैबिट्स को कैसे बनाना और हैबिट्स को कैसे तोड़ना. उसके बाद बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ना, ये भी हम देखेंगे. और अच्छे हैबिट्स के बारे में और एक मेडिटेशन टेक्निक भी हम आपको सिखाएंगे जिससे बैड हैबिट्स को छोड़ने में बहुत हेल्प मिलता है. सो नेक्स्ट, Can you all see the screen? ऊपर आपको दिख रहा है what are habits, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay, thank you. So what are habits? Habits को किसको बोलते हैं? Practice that is hard to give up. Oxford Dictionary के अनुसार कोई भी चीज, कोई आपका प्रैक्टिस है जो आपको छोड़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन उसका एक और मीनिंग है कि मेंटल एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड जो है वो भी हैबिट है. जैसा किसी का झूठ बोलने का हैबिट है, तो झूठ बोलने का इतना स्ट्रांग हैबिट हो जाता है, कई बार वो सोचते हैं कि ये गलत है, तो फिर भी वो झूठ नेचुरली निकल जाता है उनके पास. हाँ, किसी को क्लास में लेट जाने के हैबिट, क्लास स्टार्ट हो गया लेकिन क्लास स्टार्ट होने के 10-15 मिनट के बाद कुछ लोग ज्वाइन करते हैं. दैट्स अ बैड हैबिट ऑल्सो. तो एक बार आपका ये हैबिट बन जाता है तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है. एक फेमस व्यक्ति था, एक राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे. इंग्लैंड के राजा होने के बावजूद उनको चोरी करने का हैबिट था. और इंग्लैंड का एक और राजा था, उनको गैम्बलिंग का हैबिट था. गैम्बलिंग का मतलब जानते हैं ना, जुआ खेलना. जुआ खेलने का हैबिट था. और जब एक बार ऐसा हुआ कि उनके इंग्लैंड का जो लंदन में जो उनका महल है उस पर शत्रुओं ने आक्रमण कर लिया और शत्रुओं ने आक्रमण करके उस पर आग लगा दिया.
और आग लगाने के बाद भी जब महल आग में जल रहा था, तब वो एक्चुअली सट्टा खेल रहे थे, यानी जुआ खेल रहे थे। तो उस टाइम पे उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज बिल्डिंग पे आग लगा हुआ है, पर तब भी वो खेलने में इतने मगन थे कि सेड मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, थोड़ी देर बाद। इस तरह से उनका पूरा राज्य लॉस हो गया, फिर भी वो उस बैड हैबिट को नहीं छोड़ पा रहे। तो और एक और एग्जांपल है, जैसे एक चोर था, वो चोर अपने चोरी करने का हैबिट को छोड़ना चाह रहा था। बैड हैबिट छोड़ना कितना मुश्किल है इसके लिए बता। ये चोर था, लेकिन उसके मन में चेंज आया कि हम अभी चोरी करना छोड़ देंगे और हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाकर वहां पर भगवान को बोल देंगे कि भाई हम चोरी करना छोड़ दें। और वो गया वृंदावन, और वहां क्या हुआ, फिर भी उनको रात भर चोरी करने का मतलब इच्छा हुई, और फिर वो रात भर अलग अलग सामान उठाए, लेकिन फिर भी उनका मन कह रहा था कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए। फिर वो छोड़ दे, मतलब फिर से एक कोई दूसरा सामान उठाता था, फिर कहीं और रख देता था। इस तरह से जितने सारे लोग थे वहां पे, उन सबका सामान उठाया था, लेकिन कुछ चोरी नहीं किया। पर सुबह जब सब लोग उठे तो सबको अपना अपना सामान गायब था, तो सब लोग बोले कि किसने चोरी किया। तो उसने एडमिट कर लिया कि मैं चोर हूं, लेकिन किसी का सामान मैंने लिया नहीं, यही कहीं रखा हुआ। तो यानी इतने अच्छे मकसद से वो गया, फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा था। तो इस तरह से जो हैबिट्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हैबिट्स आर इनिशियली दे आर हैबिट्स को छोड़ना इनिशियली इजी है, लेकिन जैसा टाइम बीतते जाता है वैसा बहुत डिफिकल्ट होते जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हैबिट्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ सिंपल हैबिट्स भी होते हैं, सीरियस होते हैं, कुछ ग्रेव होते हैं। अरे सिंपल बैड हैबिट्स का मतलब है जैसे नाखून चबाने का बैड हैबिट है, या किसी को मान लो अपने टेबल को गंदा रखना, कपड़े साफ नहीं करना, या इस तरह के छोटे छोटे सिंपल बैड हैबिट्स। किसी को लेकिन कुछ सीरियस बैड हैबिट, जैसे धोखा देना, झूठ बोलना, या फिर चीट करना, इस तरह के कई सारे बैड हैबिट्स होते हैं। किसी को ऐसे भी बैड हैबिट्स होते हैं, मिसबिहेव करना, गाली देना। तो ये सीरियस बैड हैबिट्स है, लेकिन इससे भी खतरनाक ग्रेव का मतलब बहुत खतरनाक बैड हैबिट्स। तो ये बहुत खतरनाक बैड हैबिट्स कौन से होते हैं? वो ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसमें जैसे कोई इंटॉक्सिकेशन लेना। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि नशा, किसी प्रकार का नशा इंटॉक्सिकेशन होता है। दारू लेना या फिर ड्रग्स लेना, इस प्रकार की जो चीजें हैं, तो दीज आर इंटॉक्सिकेशन। तो ये ग्रेव बैड हैबिट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कभी आपको स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत होगा तो फिर प्लीज मुझे बता दीजिए कि ठीक है, ओके। तो अब हैबिट्स को छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक बार बन गए ना तो लाइफ लॉन्ग मतलब बहुत मुश्किल होता है। ऑफकोर्स इम्पॉसिबल नहीं है छोड़ना, पॉसिबल है, हैबिट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि यू इन अ हैबिट यू ट्राई टू चेंज द हैबिट, बहुत मुश्किल से हिच जाता है। हैबिट में से जो हिच है ना, हिच जाता है, हिच जाता है तो भी क्या बच जाता है, अबिट बच जाता है। अबिट मतलब थोड़ा बहुत, अबिट मतलब इंग्लिश में समथिंग बच जाता है। फिर उसके बाद बहुत मेहनत करेंगे तो ए जाता है, और ए जाता है तो भी क्या बचा है बिट बचा है ना, फिर भी थोड़ा बहुत बचा है। फिर और मेहनत करेंगे तो बी चले जाता है, स्टिल इट रिमेन्स, मतलब फिर भी वो बचा हुआ है। तो इस तरह से हैबिट को मतलब काफी समय लगता है उसको पूरी तरह छोड़ने में। स्पेनिश प्रोवर्ब एक है, उसमें ऐसा कहा गया था, हैबिट्स आर फर्स्ट कॉबवेब्स देन केबल्स। कॉबवेब का मतलब क्या होता है, मकड़ी का जाल, जो मकड़ियां जाल बनाते हैं, वो तो बहुत पतले होते हैं, तो उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो केबल्स होते हैं बहुत यानी बहुत स्ट्रॉन्ग वायर होता है, उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते। तो इनिशियली हैबिट्स जो है कॉबवेब्स जैसे होते हैं, यानी मकड़ी के जाल जैसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो केबल जैसे बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है।
जो हैबिट्स हैं, इसलिए इनिशियली ही उसको तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैबिट बनता कैसे, हैबिट से होता क्या है और बनते कैसे। अब देखते हैं, आप देख लीजिए किसी भी व्यक्ति को जिसको बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, तो जिनको बैड हैबिट्स हैं वो हैबिट्स शुरू कैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो दारू पीते हैं, हाँ, जो दारू पीते हैं या नशा करने का जो जिनको बैड हैबिट है, तो वो बचपन से ही वो हैबिट नहीं होता उनको, वो एक टाइम पे बनता है। हाँ? पैदाइश से कोई सिगरेट या दारू का आदी नहीं होता, तो वो हैबिट बनता कैसे। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट, राइट। सो अ थॉट, एक थॉट आता है एक दिन आपके माइंड में कि थोड़ा सा ट्राई तो करें, किसी ने कहा होगा तो थोड़ा सा इसको पी के देखो क्या टेस्ट होगा। तो एक थॉट आया, बैड थॉट माइंड में आया। वो थॉट से क्या होता है, थॉट से रीप एन एक्शन, यानी एक एक्शन बनता है। आप सोचते हैं चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, उसको क्या होगा। अपन ने एग्जाम में पास कर लिया या अपन ने मतलब कुछ कैंपस सिलेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं। और जब एक बार आप करते हैं उसको, तो फिर क्या होता है, दैट बिकम्स अ हैबिट। फिर एक बार आपने दारू का टेस्ट कर लिया या सिगरेट का टेस्ट कर लिया, ऐसा कोई भी चीज, तो फिर बाद में आपका माइंड कहता है कि एक बार तो कर लिया, दूसरी बार करने में क्या है। फिर दूसरे से फिर तीसरी बार, तीसरे से चौथा, इस तरह से वो हैबिट बन जाता है। फिर आप रियलाइज करने से पहले वो आपका हैबिट बन गया, आप उसको छोड़ नहीं पाते। फिर क्या होगा, वो हैबिट से क्या होता है, आपका कैरेक्टर बदल जाता है। फिर व्यक्ति क्या होता है, ये तो अब आपके ऊपर एक थप्पा लग जाता है कि ये तो पियक्कड़ है, ये तो ड्रंकर्ड है, इस तरह से। फिर आपका कैरेक्टर ही बदल जाता है ना, हमेशा मतलब आप उससे एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका कैरेक्टर बदल जाता है तो आपका पूरा लाइफ ही बदल जाता है। डेस्टिनी, आपका पूरा लाइफ ही बदल जाता है। बाकी सारे दूसरे बैड हैबिट्स भी आते हैं उससे। तो इस तरह से एक डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक, उन्होंने कहा, वो अमेरिकन थे, वो बोलते थे कि बच्चों को कभी डांटना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उनको बहुत बुरा लगता है, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। पर उससे क्या हुआ, अमेरिका में आप देखते हैं, मैं यूएस में था करीब 2.5-3 साल रहा, तो मैंने वहां देखा कि जो बच्चे होते हैं उनका मतलब बचपन से ही बहुत सारे बैड हैबिट्स बन जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग नहीं जाते हैं। और बहुत सारे स्टेट्स में अमेरिका में इवन ड्रग्स भी अलाउड है, ड्रग्स भी लीगल है, ड्रग्स लेना लीगल है। इंडिया में अभी भी इलीगल है, लेकिन वही यूएस में कई सारे स्टेट्स में आप ड्रग्स भी ले सकते हैं, इट इज परफेक्टली लीगल। तो उससे क्या होता है, उनका पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सो और वहां पर स्थिति ऐसा है कि लड़के लड़कियां फ्री मिक्स करते हैं और कोई भी किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन रखते हैं। उससे क्या होता है, टीनेज में भी अबॉर्शंस हो जाते हैं, कॉमन हो जाता है कि टीनेज में भी लड़कियां अबॉर्शन करने लगती हैं। और ये इसको भी नॉर्मल माना गया अमेरिका में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और फिर उसको अलो करने लगे, बोले ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, चलेगा, उसमें कोई करने दो, मतलब बॉयज विल बी बॉयज, बॉयज तो बॉयज का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से उनको अलाउ किया गया। धीरे धीरे उनको सारे बैड हैबिट्स एक एक करके, पहली बार तो उनको नशा, फिर उसके बाद जो है फिजिकल रिलेशनशिप रखना, उसके बाद धीरे धीरे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा उनको बहुत फ्रीडम दिया गया है। और मैगजीन्स में गंदी गंदी मैगजीन्स, गंदी गंदी वीडियोस, मूवीज, ये सब नॉर्मल है, ड्रग्स भी नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ, उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज भी, बंदूक ले जाना स्कूल्स कॉलेजेस में, और वो भी नॉर्मल हो गया। फिर रेगुलरली कोई न्यूज़ आता है कि बच्चे क्या करते हैं, बंदूक ले जाते हैं स्कूल में
और बंदूक ले जाकर बहुत सारे लोगों को उड़ा देते हैं, बच्चे, स्कूल के बच्चे। और ये कोई नई चीज नहीं है, हर कुछ दिन में ऐसा न्यूज आते रहता है अमेरिका। तब लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? बट अरे आप ही ने तो एलो किया, आप ही ने तो उनको बोला कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने उनको इतना फ्रीडम दिया और फिर आज ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, राइट? तो दिस इज, इसलिए हमको पहले से ट्रेन करना चाहिए। हमारी जो इंडियन कल्चर है इसमें हमको पहले से ट्रेन किया गया है कि बुराइयों से बचिए। कोई भी कुछ बैड हैबिट्स को क्यों हम बुरा बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं कि इलिसिट सेक्स बुरा है? इलिसिट सेक्स का मतलब होता है यानी शादी से पहले, शादी करने से पहले, यानी जो पति पत्नी के बीच में जो होता है उसके अलावा कोई किसी दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री के साथ या शादी से पहले जो सेक्स होता है उसको इलिसिट सेक्स बोलते हैं। और ये इलिसिट सेक्स में क्या प्रॉब्लम है, कि उसमें क्या बुराई है? अगर क्या बोलते हैं, लड़का और लड़की दोनों अगर एग्री हैं तो फिर उसमें क्या बुराई है? तो ऐसा पूछ सकते। लेकिन उससे क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च से भी मालूम चला कि उससे बहुत सारी माइंड में जो अच्छी क्वालिटीज है वो सब खत्म होती है। जैसे यहाँ बताया, प्योरिटी, विजडम, पीस ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लीनलीनेस, कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन, विचार शक्ति, धारणा शक्ति, विवेक, ये सारे चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब आपकी मतलब जब आप इस चीज से दूर रहते हैं तो आपका ब्रेन बहुत शार्प। जब ब्रिटिश वाले यानी ब्रिटिश राज चल रहा था, अंग्रेज अपने शासन कर रहे थे, उस टाइम पे वो अंग्रेज बहुत हैरान हो जाते थे कि इंडियंस का आईक्यू इतना हाई क्यों। इंडियंस का बहुत हाई, सबसे वर्ल्ड में सबसे हाई आईक्यू था आज भी। क्यों? क्योंकि इंडियंस में बचपन से ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग किया गया, इसलिए उनका जो ब्रेन है बहुत शार्प। जो अपनी वाइटल एनर्जी को जो लॉस नहीं करता है तो उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका मेमोरी और उसका जो इंटेलिजेंस जो है बहुत शार्प। तो इसलिए इससे बहुत डेंजर है। इसमें बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द जो क्या बोलते हैं उसको, सुसाइड्स और मर्डर्स जो है ना, यूथ में जितने सुसाइड्स होते हैं और मर्डर्स होते हैं, अधिकतर जो है इस लव अफेयर्स या इस तरह के जो फिजिकल जो रिलेशनशिप्स है उसके कारण। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि पुणे में पुणे जो सिटी है वहां पर 15 बच्चों का, 15 यंग बॉयज है, वो रहते थे गांव के बैकग्राउंड के, एक साथ रहते थे। और फिर धीरे धीरे उनको फिजिकल रिलेशनशिप्स मतलब स्टार्ट किए, यानी ब्लू फिल्म्स देखना, औरतों के साथ मिलना। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत लोगों को एड्स हो गया। और उनका पढ़ाई में भी कुछ लोग फेल हो गए, यानी एग्जाम्स पास नहीं कर पाए, जिसके कारण एक आदमी सुसाइड कर लिया। और किसी ने बहुत सारे कर्ज कर लिया, उसको चुका नहीं पाए। तो इस तरह से सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये फैक्ट है। तो इसलिए ये इलिसिट सेक्स जो है ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका माइंड को, आपका बॉडी को हर तरीके से, इट इज वेरी वेरी डिट्रीमेंटल, बहुत खराब है। क्योंकि आपका थिंकिंग भी हमेशा एक गलत दिशा में जाता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज भी उससे डेवलप हो सकती है। उसके बाद दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, मीट ईटिंग। मीट ईटिंग भी इसको बैड हैबिट क्यों बताया गया? इनफैक्ट आप अमेरिका में मोस्टली आजकल बहुत सारे लोग वेजिटेरियन और वीगन बन रहे हैं। जो नॉनवेज खाने का, जो एक टाइम पे ऐसा था कि यूएस में सब लोग ऑलमोस्ट एवरीवन वाज नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आज जो है ये वीगनिज्म बहुत फेमस हो रहा है। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाना छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मीट ईटिंग जब करते हैं, दो कारण है। एक तो उससे वायलेंस होता है जानवरों के प्रति, बहुत मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जानवर को मारना, तो ये मतलब पाप माना गया है हमारे शास्त्रों में। उसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो जो मीट होता है उसके अंदर जब कोई जानवर को मारा जाता है तो उसके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स जो है डर पैदा करते हैं, डर, हाँ, और पीड़ा,
ये जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में भी आते हैं, इसलिए जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज ज्यादा, इट बिकम्स फिल्ड विद नेगेटिव इमोशंस। उसके बाद एक और बैड हैबिट है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है नशा, नशा लेना, ड्रग्स लेना या सिगरेट, दारू, तंबाकू, इस प्रकार के जो भी चीजें हैं ये सब इंटॉक्सिकेशन के अंदर आते हैं। और ड्रग्स लेने से क्या बुराई है? ड्रग्स या अल्कोहल लेने में क्या बुराई है? कोई पूछ सकते हैं उसमें क्या बुराई है, हम तो किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को हार्म कर रहे हैं। ड्रग्स लेने से क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में आपको बहुत डिप्रेशन होता है, और वो ड्रग्स वापस लेने के लिए आपको पैसा की जरूरत पड़ती है, और पैसे के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है उस टाइम पे, और आपको डिप्रेशन में भी ले जाता है ड्रग्स वगैरह। और सबसे खराब चीज क्या है दारू पीने में या ड्रग्स लेने में, इन सब चीजों को लेने में? तो सबसे मेन खराबी ये है कि उससे आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जब आप दारू पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो क्या होता है, आपको आपका माइंड जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो आपके कंट्रोल के बाहर होता है। और कुछ ऐसे ऐसे गलत काम कर देते हैं, मतलब कोई ड्रग्स लेने वाले या अपने दारू पीने वाले, उनको क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिससे बहुत खतरा होता है फ्यूचर। बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भी होते हैं ना, दारू के नशे में किए जाते हैं। तो इसलिए इंटॉक्सिकेशन जो है वो बहुत घातक है, और कई बार डेथ भी होता है उससे, ड्रग्स वगैरह लेने से। ड्रग्स के ओवरडोज से डेथ होता है। हाँ, और क्रिमिनल टेंडेंसीज बन जाती है। जो ड्रग्स लेते हैं उनके अंदर अपराध करने की मानसिकता भी बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद एक और बैड हैबिट क्या है, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना। इसमें क्या बुराई है, आप पूछ सकते हैं, गैम्बलिंग करने में क्या बुराई है? उसमें बुराई यह है कि आप जो हार्डवर्क करने का टेंडेंसी जो वो आप छोड़ देते हैं, और शॉर्टकट में आप पैसे कमाने का सपना देखते रहते हैं। जो जुआ खेलते हैं वो हार्डवर्क नहीं करते, वो तो बस बैठ के खेल खेल के पैसे कमाना चाहते हैं, और आपके अंदर लोभ लालच जो है वो बढ़ता है। तो ये भी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए जाता है। तो ये 4 मुख्य रूप से बैड हैबिट्स बताए गए हैं, इंटॉक्सिकेशन, नॉनवेज, गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैड हैबिट्स हैं, जैसे लेजीनेस, अननेसेसरी सोना, टू मच सोना या टू मच खाना, टू मच क्या बोलते हैं उसको, एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन। आजकल बहुत सारे लोगों को मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल या इंटरनेट एडिक्शन बोलते हैं उसको। इंटरनेट एडिक्शन से क्या होता है, आप लोग पढ़ाई करने आते हैं कॉलेज में, लेकिन क्या होता है, इंटरनेट ऐसी चीज है जो आपको बहुत लुभावना देती है। आपको बहुत, यूट्यूब में आजकल कितने सारे वीडियोस आते हैं, टिकटॉक है, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजों में क्या होता है, आपको बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसा कंटेंट आता है, तो वो देखते ही रहोगे, आपका पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। और वो टाइम आप पढ़ाई में या कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में दे सकते थे, बट जितना आवश्यक है उससे ज्यादा है। मैक्सिमम लोग जो है ना, 80% जो मोबाइल यूज करते हैं, 80% टाइम जो है वो फालतू के अननेसेसरी चीजें यूज करते हैं। ओनली 20% टाइम जो है वो यूजफुल काम करते हैं। तो इसलिए ये एडिक्शंस, इसको कैसे दूर करें, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को अपने माइंड क्या है ये समझना है, क्योंकि एडिक्शन जो है ये सब कहाँ है, अपने माइंड में। तो माइंड में हमारे इमोशंस होते हैं, हमको हैप्पी हो सकते हैं, कभी मिजरेबल हो सकते हैं, एक्टिव या लेजी, ये सब माइंड में होता है। तो अभी हम थोड़ा देखेंगे भगवत गीता से। भगवत गीता, हम भगवत गीता की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। भगवत गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है।
आइंस्टाइन, ओपनहेमर जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो गीता को कोट करते थे। जब वो एटम बॉम्ब डाला गया था, एटम बॉम्ब को यूज किया गया था पहली बार, वो भगवत गीता से वो कोट करते थे, कोटेशन बोलते थे। साइंटिस्ट भी पढ़ते थे उसको, और उसके अलावा फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, रिलीजियनिस्ट और तरह तरह के प्रोफेसर, सब लोग इसको भगवत गीता को पढ़ते हैं। उसमें बहुत वैज्ञानिक तथ्य उसमें से निकालते हैं। तो इसलिए कि वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में हम देखेंगे भगवत गीता में क्या लिखा है। महात्मा गांधी कहते थे कि जब भी उनको डाउट्स होते थे, जब भी कोई दिक्कत होता था, तो भगवत गीता पढ़ते थे तो उनको मार्गदर्शन मिलता था। आइंस्टाइन कहते थे हाँ कि वो भी रेगुलर गीता पढ़ते हैं। तो अब भगवत गीता में क्या बताया भगवान ने? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हम कौन है? हम सब आत्मा हैं, यानी हम शरीर से अलग हैं, हम एक जीव आत्मा हैं। सबसे पहली गीता का उपदेश है। आप सबसे एक सवाल है कि एक लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या फर्क है? लिविंग बॉडी और डेड बॉडी में क्या फर्क है? हाँ, सारे केमिकल्स तो वही है। हाँ, लिविंग बॉडी में भी डेड बॉडी में भी सारे केमिकल्स वही हैं, लेकिन अचानक ये बॉडी डेड क्यों हो गई? हाँ, क्योंकि उसके अंदर से आत्मा निकल गई। सोल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्पिरिट, सोल यानी आत्मा। तो आत्मा का मतलब क्या है? कॉन्शियस होता है। मैटर जो है कॉन्शियस नहीं होता है। जैसे कोई दीवार है, उसमें कोई डिजायर्स, फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जो लिविंग है उसमें फीलिंग्स होते हैं। तो आत्मा जो है हर शरीर में एक ही होता है। जैसे हाथी हो, या देख सकते हैं हाथी है, कछुआ है, इंसान है, गाय है ना? इन सब में बॉडी अलग है। हाथी का बॉडी अलग है, कछुआ का अलग है, इंसान का अलग है, लेकिन सब में सोल जो आत्मा जो है वो तो सेम है। ठीक है? जो आत्मा जो है वो शरीर को ऐसे चलाता है जैसे ड्राइवर कार को चलाता है। कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकता। वैसे ही हमारा जो है, हमारी जो बॉडी भी आत्मा के बिना नहीं चल सकता। तो जिसमें आत्मा है उसमें उस बॉडी चेंज होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, फिर बूढ़ा होकर मर जा रहा है। ये साइकिल है, साइकिल चल रहा है ना? तो वापस जब मरने के बाद वापस से कोई जन्म लेता है, दोबारा जन्म लेता है। तो ये साइकिल चल रहा है, पर आत्मा चेंज नहीं हो रही। बॉडी चेंज हो रही है लेकिन आत्मा चेंज नहीं हो रही। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवत गीता से हम ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा ग्रॉस बॉडी का मतलब होता है हमारा फिजिकल बॉडी, जिसमें ये सब है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, यानी पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन चीजों से बना हुआ हमारे फिजिकल बॉडी, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ठीक है? ये आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसा है। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा सटल बॉडी, यानी हमारी माइंड, हमारे इंटेलिजेंस और हमारा फॉल्स ईगो। और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो क्या होता है? माइंड का मतलब होता है आपकी फीलिंग्स। माइंड में सारे फीलिंग्स होते हैं, और इंटेलिजेंस में होते हैं आपके सारे थिंकिंग। ठीक है? तो ये आपको और डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो ये होता है सटल बॉडी। सटल बॉडी यानी इसको बोलते हैं आपका सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा एक कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना? तो हार्डवेयर तो वो चीज है जो आप फिजिकली उसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो। पर सॉफ्टवेयर जो है आप उसको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन वो प्रोग्राम जैसा होता है। वैसे ही ये हमारी बॉडी में भी है। तो वो सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सटल बॉडी। ठीक है? तो उसके भी अंदर एक चीज है, उसको बोलते हैं आत्मा, सोल यानी आत्मा, जो हमेशा, जो शाश्वत है, इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस। इटर्निटी मतलब जो शाश्वत है, नॉलेज मतलब पूर्ण ज्ञान है, ब्लिस मतलब आनंद। ठीक है? जैसे कंप्यूटर में एग्जांपल ये है, कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा एक और चीज होता है, क्या? पावर। बिजली। बिजली के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों मिलकर भी काम नहीं होता है जब तक बिजली नहीं हो। उसी प्रकार से यहाँ बिजली क्या है हमारे बॉडी में? ये आत्मा है। जब तक आत्मा होगी तब तक ही ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी काम करेगी।
तो आत्मा जो है वो शाश्वत है, कभी मरता नहीं। हाँ, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात बोलते कि जैसे हमारी बॉडी बदलते जा रहा है, बचपन से लेकर यूथ, यूथ से लेकर ओल्ड एज, बॉडी बदल रहा है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा फिर दूसरे बॉडी में जाता है, फिर से व्यक्ति जन्म लेता है। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है सिर्फ वो ग्रॉस बॉडी छोड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया या कंप्यूटर टूट गया, हाँ, कंप्यूटर टूट गया लेकिन आपका डेटा नहीं गया, क्योंकि डेटा आप पेन ड्राइव के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते, ट्रांसफर कर सकते या क्लाउड के माध्यम से। हाँ, सो ऑल्दो कंप्यूटर खराब हो गया लेकिन आपका डेटा खत्म नहीं होता। उसी प्रकार से हमारी बॉडी, जो फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, तब भी इसके अंदर जो डेटा है वो दूसरे बॉडी में जाती है, राइट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा माइंड और इंटेलिजेंस। माइंड कैसे काम करता है? माइंड में हैबिट्स होते हैं, माइंड में थॉट्स, फीलिंग्स होते हैं। माइंड वो होता है जो आपको कहता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन माइंड सोच नहीं सकता, माइंड सिर्फ फील कर सकता है। सोचने वाली चीज होती है इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि। बुद्धि होता है सोचने वाला, द डिसीजन मेकर। माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ हैबिट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। सो माइंड और इंटेलिजेंस दो अलग अलग चीजें हैं, उसके नीचे सेंसेस हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल से। जैसे यहाँ एक रथ देख सकते हैं। ये जो रथ है, इस रथ में 5 घोड़े हैं और एक रस्सी है घोड़ों को खींचने के लिए, और ड्राइवर है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, और पीछे एक पैसेंजर बैठा हुआ, वो है आत्मा, ठीक है। तो ये जो रथ है, इस रथ में सबसे अहम भूमिका किसका है? इंटेलिजेंस का है, यानी जो ड्राइवर है उसका। तो जो ड्राइवर है वो अगर ताकतवर होता है तो 5 घोड़ों को कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी इंटेलिजेंस। माइंड नहीं, बल्कि माइंड से भी पावरफुल है इंटेलिजेंस। क्योंकि इंटेलिजेंस क्या करता है? वो विचार करता है कि क्या सही है, क्या गलत है ना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे फायदा है, किससे नुकसान है। ये सब सोच विचार करने का जो काम है वो इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमारे इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग का हैबिट डेवलप कर रहा है। तो ये स्मोकिंग का हैबिट होता कैसे? सबसे पहले माइंड में फीलिंग आती है कि देखो, आई एम एन इंजीनियर, आई शुड नो हाउ टू होल्ड अ सिगार एटलीस्ट। हाँ, तो मैं इंजीनियर हूं, तो एटलीस्ट सिगरेट को हाथ में कैसे लेना ये तो पता चले, ये तो मालूम होना चाहिए। ये तो क्या इंजीनियर हूं, ये कहता है क्या? अपना माइंड। माइंड कहता है कि तो इतना बड़ा इंजीनियर हूं तो एटलीस्ट सिगरेट पकड़ना तो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंस जो है वो सोचता है, बट दैट इज अ बैड हैबिट, नॉट गुड फॉर यू। Your parents won't like to see you doing this. You may become addicted to it. Don't get into wrong track. तो इंटेलिजेंस बोलता है कि ये देखो अच्छा नहीं है, बैड हैबिट है, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता है, एडिक्टेड हो सकते हो, रॉन्ग ट्रैक में मत जाना। फिर से माइंड कहता है आई थिंक इट्स फन, एवरीवन इज डूइंग इट एनीवे। हाँ, सब लोग कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस तो करूं कि सिगरेट पीने का क्या मतलब स्वाद होता है, या हाँ, सिगरेट पीने से कैसा लगता है, मजा आएगा, सब लोग कर रहे हैं। माइंड कहता है। फिर इंटेलिजेंस फिर से कहता है, देखो इंटेलिजेंस कहता है बट यू फूल, व्हाई डू यू हर्ट योरसेल्फ बाय दिस बैड हैबिट। क्यों आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो? इट वेस्ट योर मनी, आपका पैसे बर्बाद करता है, रूइंस योर गुड हेल्थ, आपका हेल्थ को भी बर्बाद करता है, और कैंसर भी हो सकता है। पैसे भी बर्बाद होते हैं, हेल्थ भी बर्बाद होता है, हर चीज। हाँ, उसको छोड़ना भी मुश्किल है, अच्छा भी नहीं है। तो क्यों इसमें पढ़ना चाहते हो? ये इंटेलिजेंस है, ठीक है ना।
तो आप समझ गए माइंड और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है? डज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्या सबको समझ में आया कि माइंड और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है? हाँ Yes, sir. हाँ, किसी को अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. सो माइंड का काम है फील करना और इंटेलिजेंस का काम है सोचना, विचार करना, राइट? तो इंटेलिजेंस को मजबूत बनाना पड़ेगा. जो इंटेलिजेंस जिसका स्ट्रांग रहता है वो हमेशा बैड हैबिट से बच जाता है, बैड हैबिट का शिकार नहीं होता. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए लड़ाई चल रही है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. कल मान लीजिए आपको एग्जाम है, ठीक है? हाँ, कल आपको एग्जाम है और आज जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं कल के एग्जाम की, और आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते 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 क्या रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई की है ना. सब ध्यान से सुनिए. रात को 12-1 बजे तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर फिर भी 4 चैप्टर बचे हैं पढ़ने. तो 4 चैप्टर जो बच्चे हैं, आप 1 बजे बहुत थके हुए हैं, आप मतलब बहुत टायर्ड हैं, तो आप सोचते हैं क्या, मैं अब सो जाऊंगा, फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के मैं बाकी बचे हुए 4 चैप्टर मैं कंप्लीट करके फिर जाऊंगा एग्जाम देने. ये सोचकर आप सो जाते हैं और सुबह अलार्म लगाते हैं सुबह 5 बजे का, ताकि जल्दी उठे, थोड़ा उसको पढ़ें 4 चैप्टर जो बचे हैं. ठीक है. तो जब 5 बजे का अलार्म लगाते हैं और 5 बजे अलार्म बजता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं बताइए? 5 बजे जब अलार्म बजता है तो क्या करते हैं? अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो उसको बंद कर देते हैं, बंद करके सो जाते हैं, या उसको स्नूज कर देते हैं. और स्नूज करते करते धीरे धीरे 6 बजे या 7 बजे उठते हैं, या और लेट. तो ये यहाँ पर माइंड और इंटेलिजेंस का जो है लड़ाई चल रही है. यानी माइंड कह रहा है कि सो जाओ, थके हुए हो सो जाओ, और इंटेलिजेंस कह रहा है कि नहीं आपको पढ़ना है. तो ये लड़ाई हमेशा चलते रहता है माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में. तो अब आप किस तरफ लेंगे? किनका साइड लेंगे? माइंड को सपोर्ट करेंगे या इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे? अगर आप माइंड को सपोर्ट करेंगे तो आप बैड हैबिट के शिकार हो जाएंगे, बैड हैबिट नहीं छोड़ सकते. लेकिन माइंड की जगह अगर आप इंटेलिजेंस को सपोर्ट करेंगे तो बैड हैबिट को छोड़ सकते. यह है सीक्रेट, बैड हैबिट छोड़. तो इसलिए हमको चॉइस हमेशा लेना चाहिए कि हम सही चॉइस लें. हमेशा अपने इंटेलिजेंस को सपोर्ट करें, इंटेलिजेंस को मजबूत बनाएं. अब देखिए ये मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ. माइंड कैसे काम करता है. माइंड इज लाइक अ बुक. बुक में एक चीज आपने लिख दिया तो वो हमेशा के लिए रह जाता है, वो निकलता नहीं. उसी प्रकार से हमारा माइंड ऐसा कि माइंड में एक चीज आपने डाला तो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए रह जाएगा. मान लीजिए एक पिक्चर आपने देखा तो आपका लाइफ लॉन्ग रह जाता है याद. आजकल इंटरनेट एडिक्शन की वजह से लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पोर्नोग्राफी से भी एडिक्ट हो जाते हैं. यानी जो नंगे पिक्चर्स वगैरह देखना, जो पॉर्न वगैरह, जो पॉर्न के जो भी कंटेंट व्यक्ति को जब देखता है तो वो परमानेंटली उनका माइंड में छप जाता है. जैसे किताब में एक बार कुछ लिख दिया तो फिर वो परमानेंट हो गया. उसी प्रकार से आपका माइंड में वो जो चीज आप देखते हैं या जो चीज आप डालते हैं वो परमानेंटली उसमें छप जाता है, फिर वो कभी नहीं निकलता. तो इसलिए आप उसमें क्या डालते हो पहले से सोच समझ के डालो. हर गंदी चीज मत डालो. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में कचरा डालोगे तो भी इतना दिक्कत नहीं, क्योंकि कचरा डालने के बाद वापस उसको साफ किया जा सकता है. आपने कचरा डाला वापस साफ कर लिया. लेकिन माइंड में एक बार कचरा डाला तो फिर उसको साफ करना बहुत मुश्किल है. इसलिए हमारा माइंड में जो स्क्रिप्ट्स है उसको चेंज करना पड़ेगा. अच्छे स्क्रिप्ट्स डालना, यानी अच्छे बातें डालनी है अपने माइंड में. वो कहाँ से आती है? किस तरह के अच्छे बुक्स पढ़ें,
मूवीज देखना है तो कुछ अच्छे मूवीज देखें, अच्छे म्यूजिक सुने, अच्छे फ्रेंड्स रखें, ये सब बहुत जरूरी है, सब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब तक अच्छे बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो कुछ बुरे नॉवेल्स वगैरह तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो फिर बुरे फ्रेंड्स के साथ, मतलब बुरे लोगों से ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छी म्यूजिक सुनना चाहिए। हाँ, बॉलीवुड के जो आजकल जो गाने वगैरह चलते हैं, लोग बहुत एडिक्टेड हैं, और हंसी मजाक के लिए लोग कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो है वो सब देखते हैं। लेकिन असली बात यह है कि वो सब देखने से अच्छा बेटर कुछ अच्छे बुक्स पढ़ें या अच्छे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं तो वो देखें, राइट। तो उससे सिर्फ आपकी माइंड में गंदगी भरती है, जिसको बोलते हैं गी गो प्रिंसिपल। ये समझ लीजिए, गी गो का मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है जो चीज आप अंदर डालते हो माइंड में वही चीज बाहर भी निकलेगी, इसको बोलते हैं गी गो प्रिंसिपल। माइंड में अगर बचपन से देखिए, अमेरिका में मैंने आपको एग्जांपल दिया, अमेरिका में बचपन से लोग ड्रग्स लेते हैं, बचपन से ही, मतलब टीनेज से ही ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, टीनेज से ही इलिसिट सेक्स या मतलब बंदूक वगैरह यूज करना, और बहुत सारे ऐसे मूवीज देखते हैं, ऐसे मतलब वीडियोस देखते हैं, ऐसा सोशल मीडिया में ऐसे चीजें देखते हैं, हाँ, जो उनके माइंड में कचरा भर देता है। और जो कचरा वो घर पे देख रहे हैं, यानी टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो वो ही कचरा उनके बिहेवियर में भी दिखेगा, मतलब उनके बिहेवियर से भी वही चीज बाहर आएगी। लेकिन उसकी जगह अगर बचपन से अगर आप अच्छी चीजें सीखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भगवत गीता या कोई स्पिरिचुअल चीज सीखेंगे, कोई भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा, आपके बिहेवियर में भी वही चीज बाहर आएगी। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने माइंड में अच्छी चीजें डालना चाहिए, यानी भगवान के बारे में कुछ अच्छी भगवत गीता या रामायण या महाभारत, कुछ ऐसे अच्छी चीजें डालो माइंड में, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल मैसेजेस डालो, ताकि वो आपका लाइफ को बदल सकता है। और स्पिरिचुअल लाइफ यानी भगवान की भक्ति करना या गीता पढ़ना, इससे क्या फायदा होगा, उस पर रिसर्च हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक किताब निकला है, उसको बोलते हैं हैंडबुक ऑफ रिलीजन एंड हेल्थ। और इस किताब में बताया गया है कि हेल्थ और धर्म में क्या अंतर है। और इसमें पाया गया है कि जो रिलीजियस होते हैं, यानी जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, रिलीजियस होते हैं, उनका उम्र भी ज्यादा रहते हैं, 7 साल लंबा जीते हैं एवरेज में, हाँ, और बैड हैबिट्स कम रहते हैं, हाँ, और उसके अलावा गुड हैबिट्स रहते हैं, सेटिस्फैक्शन रहता है। ये सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। इसलिए वो क्या करना, धार्मिकता, ये मत सोचिए कि धार्मिकता कोई बुरी चीज है, धार्मिक रहना खराब है या उससे क्या फायदा होगा, उससे भी बहुत फायदा होता है। थोड़ा सा भी टाइम कम है तो इसलिए मैं थोड़ा लास्ट तक आगे बढ़ रहा हूँ। आई जस्ट टेक बस 5 मिनट और लूंगा आपसे। तो मैं आपको एक मंत्रा मेडिटेशन टेक्निक सिखाऊंगा, और इस मंत्रा मेडिटेशन टेक्निक से क्या होता है, आपको माइंड कंट्रोल करना आसान है। मंत्रा मेडिटेशन का मतलब होता है भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम का जप करना। हाँ, मंत्र यानी जो अपने मन को साफ करता है, जो मन को साफ करता है उसको बोलते हैं मंत्र, जो मन को हमेशा मजबूत बनाता है, साफ करता है। ठीक है, तो ये मंत्र है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मंत्र है हम जो करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, इससे क्या होता है, आपके बैड हैबिट्स धीरे धीरे आपका माइंड में जितने बुराई हैं, बैड हैबिट्स हैं, सब चले जाते हैं और अच्छे अच्छे हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। हाँ,
और साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि जो भगवान का नाम लेता है उनका माइंड हमेशा अल्फा जोन में रहता है। अल्फा जोन मतलब रिलैक्स्ड अलर्ट जोन। माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है और अलर्ट भी रहता है। वो सबसे प्रोडक्टिव रहते हैं वैसे लोग। और बहुत सारे रिसर्च में भी पाया गया है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ये सब बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आप देख सकते हैं कि वो भी भगवान का नाम जप करते हैं, उससे उनको भी फायदा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडी देसाई, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पर ये बोलते हैं कि वो भगवान का नाम डेली जप करते हैं। बीन चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर मेनी इयर्स एंड आई नेवर फाउंड एनीथिंग मोर प्लेजरेबल। उनको बहुत मजा आता है भगवान का नाम जप करने। और ये एक मॉडल है, यूरोपियन मॉडल है। हाँ, यूरोप की मॉडल है, पर वो भी भगवान का नाम जप करते हैं। जैसे यहाँ आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं कि उनका जो है, जब वो मॉडल का काम करती हैं तो कपड़े जैसे ऐसा रहते हैं, तो फिर वही जब भक्ति करते हैं घर पे तो ऐसे रहते हैं साड़ी में और भगवान का नाम जप करती हैं। वो कह रहे हैं कि बाय स्टार्टिंग टू चैंट हरे कृष्णा आई फील ट्रेमेंडस हैप्पीनेस। भगवान का नाम लेके मुझे बहुत मजा आता है। ऋषिकेश मफतलाल कह रहे हैं, सीईओ मफतलाल फैब्रिक्स के, कि चैंटिंग हरे कृष्णा हैज हेल्प्ड मी फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड पीस ऑफ माइंड। और ये है फोर्ड कंपनी के मालिक एल्बर्ट ब्रश फोर्ड। और ये जो फोर्ड है, मिस्टर फोर्ड है, ये भी भगवान का नाम लेते हैं। चैंटिंग हरे कृष्णा हैज मेड अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट इन माय लाइफ। भगवान का नाम डेली जप करो। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर्स भी, जो भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। आर्मी ऑफिसर, ये भी अमेरिका के आर्मी ऑफिसर है, सॉरी अमेरिका के कि रशिया के कहीं से। तो ये आर्मी ऑफिसर्स ये भी भगवान का नाम जप करते हैं। तो इस तरह से वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डोनाल्ड टक, तो ये भी भगवान का नाम जप करते हैं। तो इस तरह से भगवान का नाम का जप करना और ध्यान करना, भगवत गीता, इस तरह की स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल लेक्चर्स सुनना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, ये सब चीजों से क्या होता है, आपके बैड हैबिट्स धीरे धीरे गुड हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ एंड करने से पहले बस मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा एक 6 सेशंस का कोर्स है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है, ये फ्री ऑफ चार्ज है और 6 सेशन होते हैं इसमें। 11 अक्टूबर यानी सोमवार से, अभी आज है आज कौन सा तारीख है, आज 7 तारीख है, यानी 8, 9, 10, 11 यानी 3-4 दिन बाद, 3 दिन बाद 11 तारीख को मंडे से स्टार्ट होगा। 1 घंटा चलेगा, 7 to 8, मंडे टू सैटरडे 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 6 सेशन का कोर्स है भगवत गीता के सार के आधार पर। इट इज एसेंस ऑफ भगवत गीता, फ्री ऑफ चार्ज है। उसमें भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वीडियोस भी दिखाई जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। उसमें पूरा भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना, ये इस्कॉन के अलग अलग टीचर्स बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन और भी अच्छे अच्छे टीचर्स बोलेंगे आपको। तो ये जो कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आप सब फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये कोर्स चलता है। बहुत अच्छा कोर्स, एक बार आप अटेंड करेंगे तो आपको मतलब आपके जितने क्वेश्चंस होंगे लाइफ के बारे में, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे। हाँ, तो हाँ, ये आपका टाइम टेबल है कोर्स का। 11 अक्टूबर को मंडे, सर्च फॉर हैप्पीनेस 7 to 8 है, लेकिन उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो ऑप्शनल है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, हम आपको अभी मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। सो गिव मी 1 सेकेंड।
सो चैट बॉक्स में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये लिंक आ गया और इस लिंक में आप छोटा सा बहुत एक शॉर्ट गूगल फॉर्म खुलेगा। तो राइट नाउ आप लोग उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं इसी वक्त, और जो भी इंटरेस्टेड हैं इस 6 सेशन का कोर्स में, भगवत गीता का एसेंस के ऊपर कोर्स है, जो भी इंटरेस्टेड है उस फॉर्म को भरिएगा, और इस फॉर्म को भरने से फिर आपको लिंक आ जाएगा और आपके नंबर पर लिंक आएगा उस कोर्स को अटेंड करने के लिए। ये आपका कॉलेज का टाइमिंग के बाहर रखा गया है, यानी कॉलेज के टाइमिंग्स के बाद ही रखा गया है, 7 से 8, ताकि आपका कॉलेज के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद ये भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि लाइफ कैसे जीना और कैसे क्या चीज हम सीख सकते हैं गीता से, ये सब चीजें। सो जो भी इंटरेस्टेड है जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फ्री ऑफ चार्ज है। और अगर लेकिन इस फॉर्म को फिलअप करना जरूरी है, जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उन्हीं के लिए वो कोर्स में भाग मतलब वो ले पाएंगे। So thank you very much. So everyone, please fill up the form. And I again thank the management of SVVV, Sri Vaishnava Vidyapeeth, for giving us this opportunity to share some thoughts on habits. And I request all the students to take this seriously. अच्छे हैबिट्स डेवलप करिए, बुरे हैबिट्स से बचिए, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रैक्टिकली कि जितने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आते हैं 99% किसी को बैड हैबिट नहीं होते, और जब तक वो 4th ईयर इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर कंप्लीट करके जाते हैं उसमें 80% बच्चे बैड हैबिट्स के शिकार हो जाते हैं। तो वो सब मोस्टली जो हैबिट्स बनने का होते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, हाँ अधिकतर। तो इसलिए ये आपको बहुत जरूरी है कि आप अभी बैड हैबिट्स से बचें, उसकी जगह गुड हैबिट्स डेवलप करें, ताकि जिंदगी में कभी भी बैड हैबिट्स फिर से आपको परेशानी। थैंक यू ऑल वेरी मच अगेन। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ये 6 सेशन कोर्स में आप सब भाग लेंगे, और चैट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप फिलअप कर सकते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू अगेन। Thank you so much, sir, for such an insightful session. And indeed, a very good session. And students are going to now understand the difference between good habits and bad habits. We are having few questions related to the same, sir. Should I read the questions for you? Yes, please. Yes. Yes, sir. First question is, which good habits do you think would be the most difficult to develop, and why? Very good. The most difficult, see, what is difficult for one person may not be difficult for another person. Like say, for example, there are people who can, one good habit is waking up early in the morning. जल्दी सुबह जगना, सुबह जल्दी उठना। पर वो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो, पर मेरे लिए मुश्किल ना हो। और कोई अच्छा हैबिट हो सकता है कि मेरे लिए मतलब इजी हो, पर आपके लिए मुश्किल, राइट? So like it depends from person to person, but generally the most difficult is actually to be selfless and caring for others. That's the most difficult. क्योंकि सक्सेसफुल होना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सक्सेस आने के बाद आप अपने लिए काम करते हैं कि समाज के लिए काम करते हैं, ये सबसे अहम सवाल। सक्सेस से व्यक्ति में घमंड आ जाता है, और वो सेल्फिश हो जाता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैड हैबिट द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड हैबिट टू डेवलप is actually to be a selfless servant for everyone. So yes, so there is another question also. How to overcome from the grave habits or any serious bad habits? Yeah, so as I said, bad habits के लिए you have to replace with good habits. As I said, आपको bad habit या good habit दोनों में एक तो cultivate करना पड़ेगा। तो बैड हैबिट को छोड़ने के लिए in order to give up the grave bad habits, you have to develop good habits. And how do you do that? By association. You have to associate with good friends. As I said, good friends, good music, good books.
तो अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहो, ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहो जिनके अच्छे गुड हैबिट्स। अगर जिनको पढ़ाई में वीक हैं और जो ठीक से सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते, उनके साथ घूमोगे तो हो सकता है कि आप भी उनके जैसे हो। तो अच्छे फ्रेंड्स के साथ आप, अच्छे लोगों के साथ आप रहो, अच्छे एसोसिएशन में रहो, those who have good habits, so then you can pick up those habits also. Okay. So there is another question. Can intelligence be called as Vivek? Vivek is one function of the intelligence. Vivek का मतलब discrimination, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये समझ पाना, इसको बोलते हैं विवेक। और इंटेलिजेंस का एक लक्षण है विवेक, राइट? इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम, इंटेलिजेंस का और भी कई सारे लक्षण है, but Vivek is also one important function of intelligence. Yes. So one last question. Sometimes it's happened, we know that we are wrong, but we actually commit that mistake. So how to avoid that? Yeah, as I said, बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी उस गलती को छोड़ नहीं पाते, और वो स्ट्रेंथ आपको आता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। हाँ, जैसे आप अगर जैसे मान लीजिए गीता पढ़ते हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रेयर्स करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, उससे क्या होता है, आपको आपका विल पावर बढ़ जाती है, आपके अंदर वो जो गलत है उसको छोड़ने का ताकत मिलती है। हाँ, तो इसीलिए तो ये सत्संग वगैरह या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वगैरह इसलिए जरूरी है, बिकॉज ऑल्दो यू नो कि ये गलत है, कि फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से आपको वो पावर आती है जिससे आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यू हैव टू देयरफॉर अच्छे संगति में रहना और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है। Thank you so much, sir, for giving the answers. As truly said by Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellent then is not an act but a habit. And this is the power of habits. And a good event never ends in the world, and that takes only a pause and keep us waiting for the next. So stay tuned, students. We will come with more events, and now I request all the students to join their respective institute orientation program at 2 p.m. Thank you so much. So Saurabh sir, over to you. Thank you, madam. I would like to say thank you to गुरुजी कि आपने इतना मोटिवेशनल सेशन लिया, और डेफिनेटली बच्चों को एक जो डिफरेंस है गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, ये सीखने का, जानने का मौका मिला होगा। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुजी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Shall we leave? Yes, sir. Okay.